Hello children, welcome back and I hope you have watched my previous videos on macroeconomics and here in this video we'll start with chapter 4 determination of income and employment and straight away we'll start with the topic. And before that I would request all the students to subscribe this useful channel, and I'm sure this channel will help you in the preparation for the exam, and definitely you will be able to score good marks, right? So we'll start with the definition of aggregate demand. In short, it is known as AD. First I will read out. Aggregate demand refers to the total demands of all the sectors of an economy at a given price level during a given year. In other words, aggregate demand is the total expenditure done by all the sectors of an economy during a given year. And all these expenditures are done by these three sectors basically: household, firms and the government. So यहाँ से चीज़ क्लियर हो जाती है कि एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज़ द डिमांड ऑफ ऑल द सेक्टर्स, हाउसहोल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन ईयर. एंड एक चीज़ और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है, दैट इज़ प्राइस लेवल, क्योंकि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो प्राइसेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, दे ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड. तो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल में जो भी डिमांड होती है, जो हम लोग कंजप्शन करते हैं, जो खर्चा करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, राइट. द नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स. लाइक कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स, बेसिकली दिस आर द 4 components of aggregate demand: consumption expenditure, then investment expenditure, government expenditure and net exports. And we can write this as C plus I plus G plus X minus M, that is net exports. So net exports का मतलब हो गया X minus M, that is the total export minus total import. C stands for consumption expenditure, I for investment expenditure, G for government expenditure on the public, on the welfare activities and net exports. I have explained all these 4 points here. और अगर 3 या 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन मिलता है आपको, you must define these points. So consumption expenditure, it refers to the total expenditure incurred by households on consuming goods and services during a given year. And it is basically directly proportional to income. That means more the income, more will be the consumption expenditure, and less the income, less will be the consumption expenditure. So it is directly related with the income. And investment expenditure, I, it refers to the total expenditure incurred by all the private firms of an economy on purchasing capital goods. As we know, capital goods का मतलब हो गया machinery, plant, raw materials which help in the production of other commodities. So that is called investment expenditure. Government expenditure की बात करते हैं. It refers to the total expenditure incurred by a government on the goods and services during a given year, and it includes expenditure like expenditure on public health, expenditure on education. As we know, एवरी कंट्री का एक आर्मी होता है, डिफेंस के लिए जो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, पावर हाउसेस. तो ये सारे एक्सपेंडिचर हम लोग काउंट करते हैं एग्रीगेट डिमांड में. एंड नेट एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर. सो यू आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज एक्सपेंसेस टू गेट एग्रीगेट डिमांड. We can also represent aggregate demand with the help of this diagram, as you can see on your screen. And now here first of all you have to assume that it is a 2-sector model theory, and there are only 2 components. One is consumption, the other is investment. So AD, that is aggregate demand, equal to consumption plus expenditure. तो ये चीज़ों को लेके आपको ये ग्राफ को डेवलप करना है, क्योंकि ग्राफ के अंदर देयर आर ओनली 2 कर्व्स एज यू कैन सी. एक तो कर्व ये है, दैट इज़ सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दूसरी कर्व है
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये दो ही कर्व है। द थर्ड कर्व इज एडी, एग्रीगेट डिमांड। So let's try to find out how you will explain this. Okay. Now from the diagram, as you can see, on the x-axis we have income of the consumers. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि we will represent income on the x-axis and aggregate demand on the y-axis. So this is aggregate demand, and R, that is this point R. So this is autonomous investment, which does not change with the change in the investment or consumption or prices. It is independent. So that is autonomous investment. And consumption, as you can see here, it increases with increase in income. More the income, more the consumption expenditure. So like this. And जो AD curve है, इसको एकदम ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है, आई मीन कंजप्शन कर्व के ऊपर, बिकॉज इट इज़ द समेशन ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ एक यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, लाइक ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट या ऑटोनोमियस कंजप्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन इन दिस वीडियो। लाइक दैट, लेट्स मूव ऑन टू एग्रीगेट सप्लाई। कि what is this aggregate supply? It is abbreviated as AS. It refers to the total supply by all the sectors of an economy during a given year, and it is also termed as national income. जो अभी हम लोगों ने national income में पढ़ा था कि the total amount of goods and services that is produced by a country during a year, so that is called national income. In the same way, that is also called as aggregate supply, and this is the diagram that you should draw. On the x-axis we have national income, on the y-axis we have consumption and saving. So you must practice these diagrams well, right? And एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, that is this line AS, aggregate supply की line है ये, and this is always equal to income. That means there are no leakage in the system, like the people whatever they save, they that is equal to the income. And ये हमेशा 45 डिग्री एंगल में आपको ड्रॉ करनी है. You must show this angle 45 degree here. Okay, so that means at every point on this line y is equal to C plus S. Y stands for income. Income is equal to consumption plus saving. We know that कि जो भी हम लोग इनकम करते हैं तो उसका एक पार्ट हम लोग कंजप्शन कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, द अदर पार्ट इज सेव्ड. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कंजप्शन फंक्शन. कि व्हाट इज दिस कंजप्शन फंक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. कंजप्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम. सो ये चीज़ें आपको याद में ध्यान रखनी है when you will define. It is the relation between consumption and income. More the income, more will be the consumption. And one more very important point here, that income increases at a faster rate than consumption. ये point बहुत ही important है. And this is called propensity to consume. क्योंकि income, consumption more or less we have the same, because जो हम लोग चीज़ें कंज्यूम करते हैं दे आर ऑल 90-95% थिंग्स आर सेम. आई मीन हम लोग उसको परचेज करते ही करते हैं. एंड जो बाकी के जो ओकेजनल या सीजनल परचेज करते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट. तो इसीलिए हमारी इनकम तो रेगुलर बढ़ती है, इट इंक्रीजेस, लेकिन कंजप्शन उस हिसाब से नहीं इंक्रीज करता. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर. सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. And the relation between consumption and income is direct and positive. Even if there is no income, consumption is always there. ये बहुत ही important point है, and इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर income नहीं भी हो then also be consume. एक beggar होता है, he doesn't earn anything but still then he consume to remain alive. And there are two components of consumption function. One is autonomous consumption, the other is induced consumption.
ये दोनों को आपको समझना है बहुत अच्छे से. नाउ व्हाट इज दिस ऑटोनोमियस कंजप्शन? बेसिकली इट रिफर्स टू द कंजप्शन दैट टेक्स प्लेस इवन इफ देयर इज नो इनकम. तो ये लाइन से ही समझ में आ जाती है कि इनकम हो या ना हो, वी कंज्यूम. दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमियस कंजप्शन. एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन की बात करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द इनकम. सो it changes with the income. A rise in the income, that means the induced consumption will also rise. And mathematically this propensity to consume can be expressed with the help of this formula. C is equal to C bar plus C into Y. Now let's find the full form of this. Capital C stands for consumption. C bar stands for autonomous consumption. That means the consumption doesn't change with the income. It remains fixed whether you make income or not. And C into Y stands for induced consumption. That means your consumption increases as you increase the income. Right. Now there are two types of propensity to consume, as you can see here. One is APC, average propensity to consume. The other one is marginal propensity to consume, MPC. And as you can see here, I have drawn a diagram for this. सबसे पहले समझ लेते हैं कि what is average propensity to consume. इसके फॉर्मूला में ही इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है. जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला. इट इज़ a ratio between C and Y, consumption and income. Very simple. So if you learn this formula, you can write the definition. It's very simple. A few more things that you should remember here. If consumption is more than income, that means average propensity is greater than 1. And if it is equal to income, average propensity is equal to 1. And if it is less than income, so APC is less than 1. Now let's try to understand this figure on average propensity to consume. Now on the x-axis we have represented income, on the y-axis we have consumption, and as you can see here this is C, consumption. and हमेशा इसको ध्यान में रखना है कि जो x-axis के थोड़ा सा ऊपर इसको ड्रॉ करना है, बिकॉज ऑटोनोमियस कंजप्शन यहाँ पे आपको रखना ही रखना है. दैट मीन्स कंजप्शन कैनॉट बी जीरो. तो इसका मतलब ये हो गया. तो एग्जाम में आपको MCQ में पूछ भी सकता है कि वाई दिस कर्व डजंट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. So it is because even if there is no income, there is consumption. So that's why this line is generally drawn little bit upper from the zero on the from the x-axis. And here you can see here there are a lot of letters written here, and this ON, it represents the total consumption. AY dash, it represents the total consumption. ON, this is the consumption C. And OY1 or like NA or AN, it represents the income. And both these lines here intersect at this point. This particular point A is called average propensity to consume. That is ON divided by OY. So consumption divided by income. So this is what is represented here. It's very simple. Now let's move on to marginal propensity to consume. Again, write the definition from the formula. Now MPC equal to delta C by delta Y. Delta stands for change. Change in consumption by change in savings. So this is what is written here in simple words. And this points you should remember. Basically always MPC, the value of MPC lies between 0 and 1. बहुत ही important point है. And if the entire income is consumed, then MPC is always equal to 1. Marginal propensity is equal to 1 if the entire income is spent. And if the entire income is saved, then MPC will be equal to 0. बहुत ही important point है short questions के लिए. And marginal propensity to consume falls with successive increase in income. तो अगर successive increase हो रही है, लगातार अगर increase कर रहा है income, तो MPC generally tends to fall. Okay, and let's try to understand this diagram of MPC.
And here again on the x-axis we have income, on the y-axis consumption, and this is the consumption curve C. And as you can see here that y1 y2 मतलब इनकम यहाँ से इंक्रीज हो गई. दिस इज द चेंज इन इनकम डेल्टा y. So that is why delta y is written as y1 into y2. I mean the difference between y1 and y2. So this is called change in income. Like that n minus m, so that will give you the change in consumption. So when you will divide this, you get MPC, delta C by delta y, that is equal to mn. Mn is this difference, and y1 y2 this income difference. So just divide, you get this, and this part is called delta C and this part is called delta y. So बहुत ही सिंपल है. एक इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ऑफ APC एंड MPC. एज यू कैन सी ऑन दिस टेबल दैट इनकम यहाँ पे दिया हुआ है, कंजप्शन दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो एज यू कैन सी हियर कि इनकम राइज कर रही है. इनकम पहले ज़ीरो थी, मतलब नो इनकम, उसके बाद 100, 200, 300. कंजप्शन एज यू कैन सी हियर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन को भी बढ़ाना है आपको. इफ़ यू विल ड्रॉ ए टेबल बाय योरसेल्फ to find this delta C, change in consumption, what we will do, we will subtract the succeeding with the preceding. So पहले केस में यहाँ पे इनकम जीरो है तो चेंज इन कंजप्शन यहाँ पे जीरो ही रखनी है. 80 के लिए 120 माइनस 40, ओके, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग. अगेन 200 माइनस 120, अगेन दिस विल गिव यू 80. 280 minus 200 will also give you 80. So this is the change in consumption. Like that we can find the change in income. So when we subtract 100 minus 0 we get 100, 200 minus 100 we get 100. So like that जो differences है तो उसको succeeding minus preceding से हम लोग निकाल सकते हैं change, delta change. Okay, now to calculate APC, C by Y. C को y से डिवाइड करना है. आई मीन 40 बाई 0 तो ये इन्फिनिटी पे चला गया. 120 डिवाइडेड बाई 100 यू गेट 1.2. 200 डिवाइडेड बाई 200 इट बिकम्स 1. 280 डिवाइडेड बाई 300 इट गिव्स यू 0.9. तो लाइक दैट हम लोग MPC की भी वैसे वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड एज यू कैन सी हियर कि उसके नोट में भी लिखा हुआ था कि MPC की जो वैल्यू होती है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो यहाँ पे 0.8 इट इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 0 एंड 1. सो लाइक दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर योर एग्जाम. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद सेविंग फंक्शन, एंड टिल देन try to revise all this properly and take care. Thank you very much for watching this video.